गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी ना किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर आते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमें बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। हमें कुछ फीडबैक्स मिले हैं जिसमें आप सबने तारीफ की है कि आपके सभी सवालों का बहुत ही बेहतरीन जवाब मिला। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि आपके जो भी सवाल होते हैं, जिस भी इंडस्ट्री के सवाल होते हैं, हम उस इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट लीडर को आपके सामने लेकर आए और वहां से आपको गाइडेंस दें। तो आज हमारा ये एपिसोड डिफेंस स्पेशल एपिसोड है। दोस्तों, गवर्नमेंट बहुत ही इनिशिएटिव ले रही है डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए और ऑलरेडी ये बहुत ही मजबूत बन चुका है। हम सब जानते हैं जो भी डेवलपमेंट्स हुई पिछले कुछ समय में, और बजट भी हमने देखा सरकार कितना इनिशिएटिव ले रही है इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए। तो आज हमारे बीच रिस्पेक्टेबल मेजर जनरल AK चलन जी हैं, जो आप सबके सवालों का जवाब देंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम टू आवर शो सर। धन्यवाद। तो धन्यवाद। जी सर। हाँ जी, प्लीज। सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विद आवर ऑडियंस हियर। Federation of Indian Industry is a not-for-profit organization. It is an advisory interface between the government and industry. FII offers a platform for networking and relationship building within and across the industrial sectors, policymakers, and the international business fraternity. Our Director General, Shri Deepak Jain, he is an entrepreneur, philanthropist, thinker, writer, and an economic policies advisor. He is the National Working President of Digambar Jain Mahasaniti. He has several papers and policy documents to his credit. To name a few, papers on economics for the Government of India, working papers on Yamuna Action Plan, Plan for Gold Bond Scheme, Voluntary Disclosure Scheme. Our speaker for today, he is also our chairperson for the Defense Committee in FII. In the past, Sir has also served thrice in the rank of brigadier at Army headquarters, dealing with planning, capability development, and capital procurement. He was also instrumental in conceptualizing and raising the Army Design Bureau. He is also the Indian Army member of the PTDI Interagency Task Force. He is at present the technology consultant with Ministry of Defense. He has also been associated with principal organization for Make in India for the past 10 years. We welcome you on our show, sir. Thank you so much for being here. Thank you very much. Thank you. Sir, तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए, my first question to you is, कि please share your vision for the defense sector in India. Thank you very much for that introduction, and those were very kind words. मुझे इस बात की हार्दिक खुशी है कि मुझे एक फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका मिला, और ये जो मुझे आपने ऑनर और एक प्रिविलेज दिया है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम सब मिलकर इसमें कैसे देश का लाभ हो सकता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका हम फायदा उठा सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम और ज्यादा लोगों डिफेंस सेक्टर और ये जो सुरक्षा जो है डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी, इसके अंदर और ज्यादा लोगों को कैसे जुड़ाएं ताकि हम एक आत्मनिर्भर तरीके से अपना डिफेंस जो है वो कर सके अपने देश का। स्टार्टिंग एट द वेरी बिगिनिंग, जो आपका सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा और वहां से आपको बताना शुरू करूंगा। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपनी सिक्योरिटी होती है। जब तक आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आगे कुछ भी सिक्योर तरीके से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक छोटी सी दुकान है कहीं पे, जब तक उसके ऊपर आप कैमरा नहीं लगाएंगे या रात में उस पर शटर बंद करके ताला नहीं डालेंगे,
तो हो सकता है कि कोई लोग आपकी दुकान से कुछ, आप कमजोर पड़े तो कोई लोग आपकी दुकान से कुछ सामान निकाल के ले जाएंगे। जैसे ही ये होगा तो वो इमीडिएट इफेक्ट करता है आपके बिजनेस पे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे, आपके हर बाकी पहलू के ऊपर, जो भी खुशहाली के पहलू है। सो देयरफॉर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप अपनी सिक्योरिटी में, जिस तरह से मैं वही दुकान के उसमें आ रहा हूं, जैसे ही आप दुकान की सिक्योरिटी में कोई लोकल कंपनी से ताला ला के लगा देते हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, रात में इसकी डुप्लीकेट चाबी तो नहीं उसने रखी हुई, या ये जल्दी खुल जाता है या कुछ। इसलिए आप हमेशा बोलते हैं कि मुझे गोदरेज का चाहिए या मुझे फलाना चाहिए, बिकॉज यू नो कि जैसे ही मैं बेस्ट चीज में इन्वेस्ट करूंगा सिक्योरिटी के, या ऐसी चीज में इन्वेस्ट करूंगा जिसपे मुझे पूरा विश्वास है, तो मेरी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है ऊपर चली जाएगी। सिमिलरली मेक इन इंडिया जो नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी है, उसके अंदर अगर आप खुद की बनाई हुई चीज जिसके ऊपर आपका मैक्सिमम विश्वास होता है, यू हैव द मैक्सिमम ट्रस्ट, credibility and assurance of that particular thing, when you start using that for your security, you feel the most secure. As long as you are borrowing a lock from your neighbor and using it on your shop, you will always have that feeling that maybe this chap may open someday and take it. Today the relations are good, tomorrow I have always left a vulnerability for myself. Same is the case. Today we have very good relationships, so somebody will give me systems for me to work. But because I do not have full control over the technology or full control over that system, I always will feel less secure than I should. And therefore, the first point that I want to highlight, जो सबसे पहली बात जो मैं आप सामने रखनी चाहता हूं, कि जो फुल सिक्योरिटी है, दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी तभी आएगी जब आप खुद अपने हाथ से वो सिक्योरिटी को क्रिएट करेंगे। दैट इज हाउ दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी विल कम when you have a true and a very deep make in India running in this country for the defense sector. Then you have trust, faith and control over the technology, and you also know that nobody else can then have some kind of backdoor entry into your security systems. Now, second point. So this is the first point I made. True strategic autonomy and national security will only come through a Atmanirbhar system of defense. Second point, you know, जब पुराने टाइम में हम बैंक में जाते थे तो एक पासबुक थी और एक चेकबुक थी। अगर उस पासबुक और चेकबुक को आप संभाल के रख लेते थे तो आपके बैंक से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। आज के दिन बैंकिंग के इतने मोड हो गए, मोबाइल पे भी ऐप आ गई है, लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं बैंकिंग, एटीएम से भी आप कुछ बैंकिंग सर्विसेज को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। बैंक में हमारा जाना थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। सो जैसे ही ये इतनी ज्यादा कन्वीनियंसेस या इतनी ज्यादा ऑप्शंस आने लगी हैं, उसी के साथ साथ उतने ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर चैलेंजेस भी बढ़ने लगे हैं। सेम इज द केस विद मिलिट्रीज। पुराने टाइम में जैसे वो चेकबुक थी, वो एक फिजिकल एक एसेट था जो जिसको हम सब सिक्योर करते थे। तो पुराने टाइम में इंडस्ट्रियल एज आर्मीज हुआ करती थी, उनके पास में हथियार थे, गोला, राइफल, और वो एक दूसरे से कहीं दूर जंगलों में आपस में लड़ते थे बॉर्डर के ऊपर। सो दैट वाज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वुड हैपन। धीरे धीरे अभी सिक्योरिटी का महीना बदलता जा रहा है। हर वेपन सिस्टम जो है वो हाईली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होता जा रहा है। ग्लोबल सैटेलाइट्स के थ्रू कंट्रोल आ रहे हैं, जीपीएस सिस्टम हर जगह घुसे हुए हैं, नेविगेशन सिस्टम सब कंट्रोल्ड है ग्लोबल लेवल के ऊपर। कंप्यूटर हर चीज में आजकल, एक छोटे से जो आप एक छोटा बंदूक से गोला भी निकलता है, अगर वो गाइडेड सिस्टम है तो उसके अंदर कोई ना कोई चिप लगा हुआ है,
अब वो चिप किससे बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, आपको नहीं मालूम है। एन मौके पे वो आपकी बात मानेगा या किसी और की बात मानेगा, आपको नहीं मालूम है। एंड देयरफॉर ये बहुत जरूरी है कि वो चिप, जब तक आप उस चिप का खुद आपने वो चिप नहीं बनाया, तब तक आपको उस चिप के ऊपर 100% श्योरिटी नहीं होती है। सो व्हाट आई एम सेकंड पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि इंडस्ट्रियल एज में हार्डवेयर की लड़ाई थी। उस टाइम में अगर हमने कहीं से कोई हार्डवेयर खरीद भी लिया तो वो मेरे पास आ गया, इससे मैं फायर कर सकता हूँ। जैसे चेकबुक मैंने बैंक से ले ली तो अब वो मेरी है, वो मेरे पास है, तो मेरे पास पूरा काबू है। बट इंफॉर्मेशन एज में लड़ाई जो है वो अब आईटी सिस्टम्स, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स के द्वारा लड़ी जा रही है, और इसलिए challenges to security are becoming very, very more distinct. It is again important that since multiple challenges are coming, which are thrown through the computer and the information age जो आज आई हुई है, तो हमें और ज्यादा इसके ऊपर कंट्रोल रखना है. So many more vulnerabilities are coming with each of this, which we need to ring fence and protect. This is the second point that I wanted to make. The third point that I wanted to make is कि मेक इन इंडिया जो डिफेंस सेक्टर में है वो बाकी मैन्युफैक्चर इन इंडिया या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे या किसी बिल्ड टू प्रिंट, बिल्ड टू स्पेक्स की किस्म के अरेंजमेंट पे जो होता है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट रहेगा. बिकॉज इसमें आपको 3, 4, 5 चीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा. पहली चीज ये है, आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर फुल कंट्रोल लाना पड़ेगा. इसलिए आपको R&D इन डिफेंस के ऊपर खूब इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और एक एरिया जिसको आप ग्रो करना पड़ेगा. आपकी एक्सीलेंस वाली जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है लाइक IITs एंड अदर सच इंस्टीट्यूशंस, वहां पे डिफेंस एज अ सब्जेक्ट को और ज्यादा जोर से और ज्यादा रेलेवेंट तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज. टेक्नोलॉजीज आर बेस बिल्डिंग ब्लॉक्स. The second thing is you will have to invest in making designs and IPRs on defense equipment out of this technology. ये जो आईफोन है या जो लैपटॉप है जिसके जरिए हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इसके अंदर कम से कम तो 300-400 मेजर टेक्नोलॉजीज गई हैं. सोनी का कैमरा होगा, JBL के स्पीकर होंगे. सो ये सब उनकी टेक्नोलॉजी ब्रिक्स है जो उन्होंने तैयार करी हुई है. लेकिन और ये सब टेक्नोलॉजी जो है ये एप्पल ने नहीं बनाई है, लेकिन एप्पल ने आईफोन का डिजाइन पेटेंट कर लिया है. देयरफॉर all these technologies are subsumed in that design. So the second point that I have here in the Make in India is, firstly, you have to build technologies. Secondly, you have to register IPRs. The person who registers IPRs will actually reap the maximum benefit. On an average, one iPhone sells for $1,000. China, which manufactures most of this iPhone, gains about $140. सारा आईफोन डब्बा में पैक होके आपके पास जो आता है वो मेड इन चाइना है और उसको $140 मिलता है. टेक्नोलॉजी और एप्पल रख के बैठा है, बाकी जो भी $800, $850 है वो लेकर चले जाता है उसमें. सो रजिस्टरिंग ऑफ IPRs and creating patents is something that will be the very important thing as far as Make in India in defense sector is concerned. Why is it more important in defense sector than anywhere else? Because defense का एक स्केल होता है. अगर आपकी आर्मी छोटी सी है, आपकी 10 बटालियन है, 20 बटालियन, छोटे छोटे देश हैं. यूरोप में कई सारे छोटे देश हैं जो हमारी एक स्टेट से भी आते हैं, उनकी छोटी छोटी आर्मीज है. उनके लिए सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट अपने आप में बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास स्केल नहीं है. सो अगर आप चाहते हैं कि अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में या यूरोप की कुछ कंट्रीज में आप अपना इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं, तो आपको
प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए आपको सारे IPRs यहाँ चाहिए. So that is the second major pillar for your Make in India. The third is you need very high quality manufacture to scale, जिसको हम tier 2, tier 3 MSME sector बोलते हैं. That is the backbone of defense manufacture, like any other manufacturer. The fourth issue that I want to highlight is you have to have defense primes. ऐसी कुछ कंपनियां हमें चाहिए जो एक्चुअली OEM या जो ग्लोबली compete करके ठेके लेंगी. Worldwide, the big names in defense are Rafael है इजराइल में, Dassault है फ्रांस में, BAE Systems है, Lockheed Martin है. So these are major defense companies. Saab है स्वीडन में. These are all major defense companies. In India, we do not really have a single defense major as on date. Now, I am making a very incorrect statement. It sounds incorrect. But if you look at it, the 4 or 5 big players, like you have Tata's. Tata's has a defense vertical, but their bigger business comes out of so many other things. So it's a very small subset of Tata's. L&T is a huge engineering and a construction company. It has a small vertical in defense. That small is also pretty big, but then their top lines and bottom lines are coming from other places. You talk of Mahindra's. They are the biggest in vehicles, finance. They have a bank. Those are their core businesses. They have a Mahindra Defense. They will not say that it is small, but really speaking, there are so many other spreads that they have. Bharat Forge, its basic business comes from forging. Though to say as a percentage, as a portion, they are one company that is very seriously invested in defense. I would rate it as possibly the first defense prime with a very, very sharp focus on defense. But this is not about telling. So we need, even if we consider these 4 or 5 as big companies, and if we grant them they are all, focused on defense, we need at least another 7, 8, 10 such companies which come with the sole purpose of, or in our part of the world, they call it defense OEMs. We will like to have those because they will understand the business of defense. MSME sector can give you high quality products which are component subsystems. But to make a business out of a complete system or a platform, you need to get defense primes to come, invest, have deep pockets, understand the defense procedure, and be able to, support a product in service for next 15, 20, 30 years. So those kind of things will come, who will actually become leaders around which this entire MSME sector will then revolve. Another area is defense equipment requires very high degree of assurance. It is an equipment that can never fail at a critical moment because the equipment doesn't fail. Then the entire nation fails if that equipment fails at a critical moment. So therefore, very high degree of certification, very high degree of assurance has to be built into a defense equipment. उसके लिए बहुत ही stringent quality controls, बहुत ही stringent tests और बहुत ही stringent and high level certifications होती हैं, जिसके लिए special laboratories and special testing infrastructure has to be created. So while I am saying this, मैं आपको ये साथ में बताना चाहता हूँ कि वो infrastructure create करना is a business by itself and it's a very good business. Pay per use infrastructure जो है, so testing, evaluation और certification infrastructure जो है वो defense के लिए चाहिए. There is a very big lack of such infrastructure in the country, and that is an opportunity which one can get to. And the last point is that we need to also create a ecosystem कि defense equipment जब
खरीद लेते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, और वो क्योंकि बहुत हार्डी और बहुत स्टर्डी होती है, तो 20, 25, 30 साल के लिए सर्विस में रहती है। अब 20, 25, 30 साल के लिए जब वो सर्विस में रहती है, अगर हमने कहीं बाहर से कोई इक्विपमेंट खरीद ली है, तो डॉलर टर्म्स में उसकी 30 साल की सर्विस कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो धीरे धीरे करके हमें इंटरनली सस्टेनेंस, मेंटेनेंस, पीरियोडिक अपग्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास क्रिएट करना है। जो तो इक्विपमेंट हम खुद बनाएंगे उसका तो नेचुरली हमारे पास में होगा, लेकिन जो इक्विपमेंट हमने बाहर से खरीद रखी है, ओवर अ पीरियड कुछ स्ट्रेटेजिक टाइप्स करके या और कोई तरीके हैं जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे और उसकी मेंटेनेंस अगर हम इनसाइड करने लगे, सो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग स्पेस फॉर यंग MSMEs और स्मॉलर कंपनीज टू कम इन and make good business out of it. So this is as far as the opportunity lies. Coming now, after this 10, 12 minutes of talk, to your question, what is the future of defense sector? The future of defense sector is very bright. Technology wise, we have the finest brains in the world. We possibly did not concentrate so hard on building defense technologies, but we were very good in the IT. Gradually, defense is moving into the information domain. So there is a nice convergence happening here. If we start using whatever technologies we are building with a defense kind of a thought behind it, I think we can build some of the finest technologies and we can create over the next 10 years some of the best patents for products which will have a lot of resonance outside this country, across the globe. As far as manufacture is concerned, India has been always a very, very competitive place for manufacture. Our price competition is one of the best. Our labor, our infrastructure costs and all are low, and therefore we are able to give very high quality at very low costs. So with the defense opening up here, this is a very, very big factor that we need to take care of, and we could very quickly get into being an export hub for defense. We already are doing, but we can upscale it much more. Coming to testing and infrastructure, yes, we need to create this. This is a business opportunity. I have already spoken about it. Nothing more on that for the moment. And the last point is sustenance. We have inventories which may be lakhs of crores. वो एक अगर हम आज सारी अपनी इन्वेंट्री को बदलना चाहें और हम पूरा पैसा भी डालें, तो वो अभी 20 से 30 साल लगेंगे इन्वेंट्री बदलने में. इतनी ज्यादा इन्वेंट्री है हमारे पास में ओवर द इयर्स. सो रियली स्पीकिंग, उस इन्वेंट्री को मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना, इंडिजिनस तरीके से उस इन्वेंट्री को सर्व करना is also a very good business. It's a low cost and a very quick return on investment business. So this is an area that we must concentrate on. And if we do all these things in whichever capacity, I see with the Prime Minister's vision and this Atmanirbhar campaign, which has taken good steam, all the incentives they are providing, there's a great future for the defense sector in India. Thank you so much, sir. That was a very wonderfully descriptive and very informative background and I would say a world of opportunities for our Indian entrepreneurs. Moving on to the second question, sir. Since there is such a focus on the indigenous production by the government of India, and very recently our defense minister had also declared that there would be a certain sort of ban worth crores of rupees on the defense equipment. So as we can see, the government is really thrusting on indigenous production. How does the government really plan or strategize on executing this? Okay, so there are 3-4 policy initiatives that the government has taken. I will connect briefly to the previous answer. You see, technology is an important piece. You can't get into serious defense unless you have control of technologies.
So that is one piece, and the rest of it is all production and manufacture here in India. And manufacture जैसे है, because there is a single customer, that is only the military. Manufacture जो है वो beyond a scale, their demand starts diminishing. So आपकी manufacture तभी ही consistent और sustained effective रहेगी अगर आपके पास में एक अच्छा export का माध्यम भी हो. तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने इंडिया में मैन्युफैक्चर इनकरेज करनी है तो ओवरनाइट सब कुछ इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होगा. नॉट नाइदर इट इज रिक्वायर्ड कि सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो. समवेयर यू विल बी फीडिंग ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स. आप कुछ ना कुछ ग्लोबल सप्लाई चेन से उठाएंगे. जब आप ग्लोबल सप्लाई चेन से कुछ ना कुछ उठाएंगे, उसमें आपको क्या करना है, you will have to make sure that there are certain incentives given. आपको import duty ना देनी पड़े, आपको export में थोड़ा incentive मिले. So those kind of things. The government has taken care of all of that. So it has initiated a series of actions in the technology front. They have एक technology development fund create किया गया है जिससे एंटरप्रेन्योर्स को कुछ पैसा ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा so that they build technologies. एक वो किया गया है, क्या बोलते हैं उसको, आईडेक्स प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें अबाउट 400-500 करोड़ रुपया डाल दिया है, जिसमें यंग इनोवेटर्स को पैसे दिए जा रहे हैं so that they are able to innovate good ideas and produce defense related products. So that is as far as technology. There are other chota initiatives, but that is how it works. The manufacture side, the government has specifically created corridors. One corridor is in Uttar Pradesh, that is called the UP Defense Corridor, और एक साउथ में किया गया है which is the Tamil Nadu Defense Corridor. Now corridor के अंदर जो भी आदमी, 2-3 एडवांटेज है. पहली एडवांटेज है पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को वहां पे कंसेशनल रेट पे लैंड दिया जाएगा, बिजली दी जाएगी, टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा. वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश करने से कुछ और इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. उसके बाद तो दूसरी चीज होगी वो ये है कि उसके अंदर जो ये डिफेंस कॉरिडोर है, इसके अंदर आपको सारा इकोसिस्टम मिल जाएगा. Within few kilometers only, you will have production. You will have MSMEs who will be giving you, the support, and you will also have testing infrastructure so that you make something. वहीं पे आप टेस्ट evaluate करिए, वहीं पे आप certification कराइए, वहीं पे quality control होगा, and you are ready. And also they will be linked to special export oriented economic zones, and also even the export part can be taken care of in case the focus is on export for that particular product. So इस तरह का उन्होंने बहुत सारे initiatives create करे हैं to make this happen. Now once you've created this, तो आपने सारा जो है, जो ground work है वो कर दिया है end to end. Now how do you force people to get into this? So again by policy they have created a list कि आज के बाद ये सब आइटम्स जो हैं हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे. देयर इज अ बैन ऑन इंपोर्ट. तो अगर किसी को बनानी है तो ये केवल हिंदुस्तान में बनेंगी. नाउ यू मे आस्क अ क्वेश्चन कि अगर हिंदुस्तान बना नहीं पा रहा या उस लेवल तक अभी रेडी नहीं है तो क्या किया जाए. सो उसका भी उन्होंने आंसर दिया है. उन्होंने बोला इफ देयर इज समथिंग दैट इज नॉट, यू आर नॉट रेडी, तो यू कैन क्रिएट अ जॉइंट वेंचर in which the control take will remain with India. And so either I am able to make it, or if I am not able to make it, I make sure that the other country is not able to sell it to me. So if he wants to sell, it will have to come here and sell. So इस तरीके से इन्होंने किया है. पिछली बार इन्होंने 101 आइटम्स डाली थी, इस बार 108 आइटम डाली है. And this import negative list, इस बार उसको positive list बोल रहे हैं कि but banning of import, the list is growing day by day, and it is growing for the simple reason that those countries
If they still want to sell, they will have to come here and set up plants, set up arrangements in India. So it gives a thrust to Make in India. Sir, as we discussed that there is a major thrust by the Indian government towards indigenous production. Are there any political repercussions to this decision on a global level? See, as far as India is concerned, it's a very sovereign decision. Every nation has a sovereign right, strategic autonomy and to its self-defense. So, in a political sense, there are no repercussions, but जिस डिप्लोमेटिक और बिजनेस सेंस अगर आप डिप्लोमेसी की बात करें तो नेचुरली अभी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने एस्टेब्लिश सप्लाई चेन्स बना रखे थे, वो अब डिसरप्ट होंगे बिकॉज आत्मनिर्भर भारत आएगा. कई ऐसे सप्लायर्स थे जो टियर 2 सप्लाई इंडिया में करते थे, who were actually doing it at very big profits. तो उन सब का थोड़ा सा ऑब्वियसली बदली होगा बिजनेस का तरीका. कुछ एक टेक्नोलॉजीज जो है, बिकॉज अब जैसे ज्यादा देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज पैदा करने लगते हैं और फ्यूचर की जो लड़ाई है वो बेसिकली टेक्नोलॉजीज की लड़ाई है, तो टेक्नोलॉजीज को उतना ज्यादा सेफ गार्ड करना शुरू करते हैं नेशंस. सो अभी जो चीज आपको B2B मिल जाती थी, दी हायर एंड टेक्नोलॉजीज G2G तरीके से ही आपके पास आएंगी. सो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेंगे जहां पे डिप्लोमेटिक इश्यूज विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ इम्पोर्टेंस. उसके अलावा डिप्लोमेसी में अलाइनमेंट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल एक दुनिया में एक बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसमें कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो टर्की, चाइना, पाकिस्तान, वो एक वर्टिकल है, वो इक्विपमेंट केवल उसी वर्टिकल में बिकता है और उसी तरीके से इंडिया विल नेवर बाय एनीथिंग आउट ऑफ दैट वर्टिकल, बट देयर आर मेनी कंट्रीज दैट विल बाय. सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैज ऑलवेज बीन देयर. एज फार एज इकोनॉमिक थिंग इज कंसर्न्ड, यस, जितनी जल्दी हम अपनी कैपेबिलिटीज बनाएंगे उतनी तेजी से जो बाकी कंट्रीज हैं वो इतना मैसेज अब जाना शुरू हो गया कि अब आप इंडिया में बेच नहीं सकते. अब इंडियन कंपनी ही जो है वो बेचेगी. मेक इन इंडिया पे गवर्नमेंट बहुत सीरियस है और कुछ एक आइटम्स हैं वो उन्होंने बिल्कुल बैन ही कर दिए, वो नहीं आप बेच सकते. सो ऑल दीज कंपनीज नाउ आर scampering to set up offices in India, are running to create alliances in India. So this is an opportunity for all these companies also. और जैसे वो यहाँ पे करेंगे और उनको यहाँ के advantages दिखेंगे, incentives दिखेंगे, so as a flow out, India will then start actually exporting also, because जो कंपनी इंडिया में एक joint venture create करेगी और यहाँ से जो product बना के बेचेगी, that product will be much more competitive than जो उसने लंदन में या स्कॉटलैंड में अपने फैक्ट्री से निकालना था. Because Indian competition, India is very competitive as far as labor and all these things are concerned. So actually they will find it very attractive to set up bases here and use this as an export hub, which will give us all the advantage of being a major arms exporter 5-7 years down the line. Sir, as we all know, this is a very I've had a few connections. I've had a few friends from Israel, and I learned from them that it's a mandatory service that they have. After once you become an adult, you're 18 plus years of age, you have to mandatorily serve in the military for 2 years. So is India ready for such a change? Will India ever welcome such an initiative? Okay. So 3-4 points. Firstly, जो population scale है, it does not ever justify this kind of a thing to happen. Israel is a very small country. उनका जो military model, it has very small borders to defend. So it maintains in peacetime a size of military which it needs to expand very quickly
in case it goes to war. So that conscription model is the best model that suits them. Secondly, you are doing conscription on a very small population base. So अगर आप सबको भी बोलते रहेंगे तो उतनी मतलब there is उतनी vacancy है, and roughly the population which comes into that zone and the requirement always matches. In our case, our population base is very very large. मतलब 135 करोड़ लोग हैं इस कंट्री में, and your army is how much? 1.3 million, that's it. सारी मिलिट्री मिला के 1.6 million. So आप उसको कर ही नहीं सकते. I mean, it's not really possible. That model, even if you want, doesn't work. But that's mathematics. The more important part is, why would anybody follow that model? They would follow that model because they want to maintain a small army, but because they feel that they are threatened all the time, they would want trained reserves all the time available so that they can quickly, come and respond. In our case, our army is so big that there is an inherent reserve which is built in. However, having said that, let me also tell you that there are advantages of some military training. It brings in discipline, it brings in pride, it brings in nationalism. So yes, there are good points of doing this. So conscription model नहीं होगा, लेकिन हमने बहुत attractive और options खड़ी कर रखी हैं. For example, हमारा एक एनसीसी का बहुत वाइब्रेंट मोड है जिसमें सबको थोड़ा बहुत मिलिट्री ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है. That is being strengthened even further. उसको और ज्यादा एक्सपैंड और स्ट्रेंथन करने का सोचा जा रहा है. उसके बाद में हम मेन स्ट्रीम जो मेन कमीशनिंग होती है हमारी एकेडमी से, उसके अलावा हमने एक शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग रखी है जिसके अंदर people can join, and after 5 years, if they want to continue, they can continue. If they don't want and want to move back into the civil domain, they can do it. So that is also a very popular way of inducting, and so that is happening. The third thing is that of late, the present establishment, the present chief, he mooted a very good proposal of something called tour of duty, in which for a little while, 6 months or so, people can join and have a little feel. And उस tour of duty में हम specialist लोगों को रखना चाहेंगे who will bring special skills into the system. And of course, क्या उसका period होगा, कैसे contract बनेगा, those are things which are still under negotiation, and which will be better known by the people who sit in the system, the details of it. But एक जो conscription model है उसकी actually हमें जरूरत नहीं है. But yes, advantages of having worn a uniform at some stage in your life are good, and therefore there are these options through which everybody who has that spirit has got opportunity that he can wear uniform. Thank you so much, sir, for that wonderful answer. And I genuinely did not see this perspective of the maths behind it. But in general, I think, sir, we've had a very wonderful session today, and there is a whole lot of world of opportunities that you've presented in front of our audience, and that has probably been not very much in discussion. And since we've had you on our defense committee as our chairperson, I think we have a long way to go. There's so much work to do, and इन्हीं बातों पे सर आगे चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि we do have a very bright future ahead of us. In fact, I would like to also take this opportunity that from 1st of July onwards, I have already penned down a few things which I will be putting across to the Director General, and we have a very planned sequence of events in which हम अपने MSME सेक्टर को जोड़ना चाहेंगे. कहाँ opportunity है specifically हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे. There are some guest speakers, there are some people that I have in mind. I've already reached out, they have agreed. So we should be having at least 1 to 2 interactions every month, very specific ones.
including a planned training program of how to join in the defense in the first week of August, for which I've already drawn out the contours and the syllabus. That's wonderful, sir. That's a wonderful initiative. Yeah. So thank you very much. It was great talking to all of you, and as always, it's an honor. And we really look forward to a great innings together in future. Thank you so much, sir, Thank for you. joining us Bye-bye. today and sharing your wisdom with us. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you so much, everyone, for joining us today. We make entrepreneurial journey easy for you. We bring experts from the industry to you every week, and you can learn the trade and do's and don'ts right from your home. So subscribe to our channel on Facebook and YouTube and stay connected with us. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. Tell us in the comments section which industry you would like us to connect with, what more topics you want us to talk about. Leave us comments about your questions, thoughts, feedback about our episode today. See you next week.